हेलो एवरीवन, आई एम नीलिमा एंड एज यू ऑल नो मैं अभी पीएचडी कर रही हूँ आईआईसी बैंगलोर से इन मॉलिक्यूलर बायोफिजिक्स यूनिट डिपार्टमेंट। सो मेरा काम जनरली स्ट्रक्चरल बायो पे है एंड आज हम बात करने वाले हैं एक टेक्निक के बारे में, दैट इज़ एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब लोगों ने कई बार सुने होंगे इस टेक्निक के बारे में, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग करते हैं पर्टिकुलरली डीएनए डिटेक्शन के लिए और आरएनए डिटेक्शन के लिए। सो हम लोग जब भी पीसीआर लगाते हैं, पीसीआर करते हैं, तो पीसीआर इज़ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बाद जो भी हम लोग टेम्पलेट के हिसाब से हम लोग कुछ प्रोडक्ट देखने की कोशिश करते हैं। सो पीसीआर के टाइम क्या होता है, एक डीएनए टेम्पलेट हम लोग पीसीआर रिएक्शन मिक्सर में डालते हैं और उसके हिसाब से हम लोगों को उस टेम्पलेट से कुछ प्रोडक्ट बनने को दिखता है। अभी एक वायल के अंदर ये पीसीआर रिएक्शन होता है, लेकिन आफ्टर पीसीआर हाउ कैन वी चेक दैट लाइक वट एवर प्रोडक्ट दैट इज आवर प्रोडक्ट ऑफ इंटरेस्ट और नॉट, और समथिंग एल्स हैज़ जनरेटेड इन द पीसीआर रिएक्शन। तो हम ये सब चेक करने के लिए उस पीसीआर प्रोडक्ट को दिस एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू रन करते हैं और इस रन करने के बाद हम लोगों को पता चलता है ओके ठीक है, मेरा पीसीआर प्रोडक्ट ठीक से जनरेट हुआ है और पीसीआर सही से काम किया है या नहीं। इसके अलावा भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें भी हम लोग चेक करते हैं। अगर कोई कुछ आरएनए प्रोडक्शन दिखना चाहते हैं और लेट्स से कुछ लाइगेशन दिखना चाहते हैं कि प्लाज्मिड के एक प्लाज्मिड में कुछ डिफरेंट जीन हम लोगों ने लाइगेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस प्लाज्मिड में क्या होगा, थोड़ा सा बेस पेयर बढ़ जाएगा क्योंकि आप लोग एक जीन बाहर से ऐड कर रहे हो। तो वो भी लाइगेशन या डाइजेशन, लेट्स से आप एक पूरा प्लाज्मिड को डाइजेस्ट कर रहे हो डिफरेंट फ्रेगमेंट में, वो भी आप लोग इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू आप लोग चेक कर सकते हो, दिस एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। ओके, जैसे मैं बात कर रही थी कि डीएनए डिटेक्शन हो या आरएनए डिटेक्शन हो या डिफरेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वर्क जैसे कि लाइगेशन या प्लाज्मिड डाइजेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चीज़ें हम एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से देख सकते हैं। लाइक विजुअली ऑन जेल वी कैन चेक लाइक बेस्ड ऑन द बेस पेयर, दैट इज द साइज ऑफ द प्लाज्मिड और एनी टेम्पलेट, एनीथिंग you want to see, that you can see on the gel through this Agarose Gel Electrophoresis. Now we will talk about the methodology and protocol and all these things we will talk about. So first, what we generally do for Agarose Gel Electrophoresis, we have something called agarose powder. So we have agarose powder that is you can purchase from different company, like based on the purity. Like we generally use for our biochemical work, that is from the Sigma chemical, that is the more purest, that is the 99.95% pure agarose powder. So we have this agarose powder, right? And what we do, we take this agarose powder and we dissolve it in agarose powder and we dissolved it in one buffer called TAE buffer. On Google you can check the composition of this TAE buffer. You can check. I will give you as well the composition for the TAE buffer. Now how we make it, that is one thing. So now what we generally do, based on your readout, based on your template size or based on your whatever product size you want to see on the gel. Let's say you want to see 200 base pair or you want to see 1 kb. Now 1 kb each is like much higher, right? So the size of this product will be higher, so you need less concentration of the agarose gel. So based on this we can make 1% or 1.5% or 2% agarose gel. Now how we will make, we will take for this 1%, what we generally do, we take 100 ml of this TAE buffer and we add 1 gram of agarose powder. So this for 1% we generally take 1 gram of agarose powder and 100 ml this TAE buffer. Now for stock you can make 10x of TAE buffer and then from there you can make 1x, and this 1x you can use it. Now this you can keep it in your lab for like in room temperature for a long time.
So now that's how we generally make the agarose gel. Now after adding this agarose powder in this 100 ml of tea buffer, you can see there are you can see in that beaker there are particle like things. Okay, now what you have to do, you take this beaker and you put it in the oven and you dissolve it like 10 second you keep it in the oven and slowly you start dissolving the this agarose powder in this TAE buffer. Now after heating it, like you can't touch it, it's very hot. Now you make sure you cool down properly this complete solution, keep it in the room temperature for some time and just check it little bit whether it's cool or not, or it's like hot or not. All these things you check it, and जब आपको लगेगा कि ये properly मतलब थोड़ा सा cool हो गया है, थोड़ा सा you can touch that beaker, then you add ETBR. Okay, now you all know this ETBR, that is ethidium bromide, right? And we all know it's an intercalating agent, and in the DNA there are base pair like this, and in this ETBR will go and stuck there, and we can see this as a fluorescent. When we check in the gel doc, we can see in the gel we can see the bands. Now that's how it worked. Now let's say this is the gel. Okay, now what we do, we have a 1 kb DNA ladder, and for RNA we have RNA ladder as well. These are the marker. Now these will give like these bands, and we know the size of these bands. Now when we load our sample, so these are the sample. Okay, and it will give band here, let's say here. So according to this we can check the molecular weight of this product, particularly whether it's from ligation, whether it's from PCR or something. We can check the size of this DNA or RNA. We have RNA ladder as well. Ladder means the marker. So whatever bands are there, we know the actually what is the base pair or how much is the length of these particularly these bands, we know that. So based on that we can check our product as well. Now I will talk about the practical part little bit, and after this I'll upload one video that is the proper practical view from the lab. So what we do, we have something called gel casting apparatus. Okay, so this is like a box kind of thing, and we have comb. So what is comb? It's like it's generally looks like a comb. So we have like this. Okay, now we have box, and so and in that box we generally, what we do, we take that box and we put a tape. चारों तरफ से हम लोग टेप लगा देते हैं ताकि जब हम लोग वो लिक्विड पोर करें वो कहीं से निकले ना। तो चारों तरफ से हम लोग क्या करते हैं, पूरा ऐसे टेप लगा देते हैं, ठीक है। और जहाँ पे भी कोम का पोजीशन होगा, सो ऐसे ऊपर की तरफ कोम का पोजीशन होता है, हम लोग क्या करते हैं उस बॉक्स में वो डाल के, मतलब एगारोज जो भी हम लोगों ने हीट करके बॉयल करके पूरा लिक्विडिफाई किया है और उसमें ETBR मिलाने के बाद उसको पोर करते हैं, और जिस तरफ वो कोम का पोजीशन है वो कोम को ऐसे डाल देते हैं। आई विल पुट ए वीडियो आफ्टर दिस वीडियो सो दैट यू कैन सी द प्रैक्टिकल व्यू एज वेल. ओके, एंड आई विल पुट one image as well for like with this video as well, so that you can actually imagine how it works. So we put the comb here, and after solidifying it, what will happen, it will be like solid, one solid mat kind of thing, and we can remove that comb easily. And after that, in that, so if you put this on the gel, you will have this kind of well, and in that well you can put your sample. So what we do, so with my, let's say I want to check one PCR sample. So with this PCR sample we add DNA loading dye. Okay, just to check how much it runs. Let's say your loading dye is here, so you know your DNA is behind this only. हम लोग ये चेक कर सकते हैं
तो DNA लोडिंग डाई हम लोग इसके साथ ऐड करते हैं ताकि हम देख पाए कि जेल में वो कैसे रन हो रहा है। तो इसके बाद रन होने के बाद डायरेक्टली हम लोग वो जेल कास्टिंग जो भी apparatus है उससे जेल को निकालते हैं और जेल डॉक में उसको विजुअलाइज करते हैं। आई विल पुट वन इमेज ऑफ दैट एज वेल। सो दिस इज द full overview of Agarose Gel Electrophoresis. After that, I will put a video of the practical view, like from the lab. Whenever I will do Agarose Gel Electrophoresis, that is our like normal basic work. So whenever I will do, I'll put one video. Thank you so much. If you like the video, please like it and share with your friends and subscribe my channel. Thank you so much.